मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पे भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे इसमें पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे। बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah itne arse ke andar they've improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। फरिश्तों को शिकायत है कि ये रब बशर गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो जाहिर भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 4 p.m. Hello, greetings. I'm Badar. I'm director at Powerhouse Private Limited, and we are very excited from Powerhouse to participate in IEEE 13 Industrial Fair, which was here in IEEE and is responsible. We believe that IEEE platform is a great platform which benefits the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition here in Karachi. IEEE platform and fairs are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products so that we can get the benefit, and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition as they always do, and we see that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going to attend this exhibition. So thank you very much. Look forward to see you.
ये जो इवेंट हम करने जा रहे हैं एक्सट्रीम शूटिंग कंपटीशन, ये हैंड गन का इवेंट होगा पिस्टल के साथ। जो माहिर निशान है ये उनके लिए है। एक तो हम जो नए शूटर्स हैं उनके लिए तो हम करते रहते हैं। ये एक प्रोफेशनल इवेंट है कि दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमारी टीम जाती थी बाहर के मुल्कों में ये इवेंट खेलने के लिए, तो हमने कहा कि जो चीज़ें बाहर होती हैं लेट्स ब्रिंग देम टू पाकिस्तान अंडर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बैनर, और हम उसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि जितने भी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, रेंजर्स है, ASF है, या इन जो बाकी प्रोविंस की जितने भी पुलिस हैं, कमांडोज हैं, इन सबको हमने इनवाइट किया है कि वो अपनी स्किल्स के साथ जो अपने उनके प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो आके इस इवेंट में हिस्सा लें और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए इसमें सबको ओपन चैलेंज किया है। हमने कुछ इसमें खास इनामात रखे हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज रखी हैं। उसके अलावा जब हम ये अर्ज करने जा रहे थे तो यूनिफॉर्म पर्सन तो हम शूटिंग करते रहते, तो सिविलियन जो थे जो कि जो बेहतर शूटर्स हैं उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट आई कि हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो हमने एक सिविलियन कैटेगरी रखी है कि उसमें जितने भी सिविलियंस हैं जिनके लाइसेंस वेपन हैं वो आके अपने शूटिंग की जो स्किल्स हैं वो आजमाएं और इसमें एक ओपन कंपटीशन हिस्सा लें। फिर एक हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+ % हमारे वुमेन की आबादी है। तो ख़वातीन के लिए हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है। जो भी ख़वातीन शूटर्स जिनकी वेपन हैंडलिंग बेहतर है या जिनको लाइसेंस वेपन है वो आके इसमें हिस्सा लें और इसमें भी अपनी जो स्किल्स हैं उसको आजमाएं। तो ये हमने इनिशियली 6 सितंबर को डिफेंस डे पे रखा था, मगर क्योंकि चैलम का मौका है और इसमें तमाम हमारे लोग मसरूफ़ हैं तो हमने इसको 9 सितंबर पर लेके गए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है जिसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूटर्स हिस्सा लेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे एक पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बाहर जाए और ये जब हम दिखाएंगे कि जी पीसफुली लोग यहाँ पे बेहतर तौर पे इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से और सिंध पुलिस तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनके सपोर्ट के साथ हम इसको कर सक रहे हैं और इसमें जितने भी लोग हैं सबको मैं इनवाइट करता हूँ कि इसमें हिस्सा लें और अपने स्किल्स आजमाएं। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ बदर एक्सपो का, उनकी टीम का, कि वो इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं और इसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें और ये जब हम इसको प्रोजेक्ट करें तो एक बेहतर तौर पे हम पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के आगे रख सकें। थैंक यू। मकसूद साहब ये बताइए कितनी रोजा ये कंपटीशनशिप है, कितने इसमें जो शूटर जो है इसके अंदर शिरकत करेंगे, उनकी जरा डिटेल। 1 डे कंपटीशन है। सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इसके अंदर जो लोग ना सिर्फ ये कि जो हिस्सा लेने आ रहे हैं, जो उनके साथ गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के लिए, जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने वो रखा है ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमान नवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो इसमें हिस्सा लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इमेज है जो कि हम पेश करेंगे दुनिया के आगे कि न सिर्फ कंपटीशन हो रहा है बल्कि ये सिंध की रवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने पीने। इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो 60+ लोगों ने रजिस्टर किया है तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और लोकल। ये वो लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म पर्सन है। उसके अलावा सिविलियन कैटेगरी मिला के टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने इसको अपने आप रजिस्टर किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000, थर्ड प्राइस 30,000 है। इसके अलावा हम उनको मेडल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे।
जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें जो खुद खेल रहा होता है उसकी अपनी तरफ से होती हैं। उसके लिए हमने पीओएफ वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट किया कि वो अपना स्टॉल लगाएं, वहीं से वो बुलेट्स ले सकेंगे और वहीं से वो अपनी शूटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है ताकि वो आके अपने प्रैक्टिस करें, ताकि मैच डे पे कोई उनको नया सरप्राइज ना मिले। तो ये सब के लिए हमने एक ही जैसा स्टैंडर्ड रखा है ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इस टाइम जो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि कॉन्सुलेट्स में काम कर रहे हैं, सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इनविटेशन भेजी तो जो कॉन्सुलेट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं वो कुछ आएंगे जो यूनिफॉर्म कैटेगरी में करेंगे, और जो सिविलियन है वो सिविलियन कैटेगरी में। तो जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आर आल्सो यूनाइटेड और वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, ये इस बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है वो जरा थोड़ा सा। मकसद ये कि हमारे लड़के, आप ये मेरी शूटिंग टीम खड़े हो जाएं, ये हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हैं और इसके अलावा इंस्पेक्टर शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं कराची में। ये वो लोग हैं जो अब शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर करी जाके अपने इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया। तो वो जो लोग वहाँ पे देख के आए, सीख के आए, हम उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनकार कर रहे हैं। नॉर्मली बाहर ये मैसेज पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव मीडिया इमेज है कि पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, सेफ नहीं है, तो ये उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसे हम भी यहाँ पे करते हैं, और हम तमाम जितने भी फोर्सेज हैं उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन करने के लिए, जब हर जगह से लोग आएंगे एक दिन अपने एक साथ गुजारेंगे शूटिंग में, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो कि शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है, और वो सेम की मेहमान नवाजी से मुस्तफीद होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो कि ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान हम दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हम दें कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर हैं, नॉर्मल हैं, और हम भी वही चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि दुनिया में किसी और जगह पे होती है। देयर इज नो एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आपको यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं और उसकी हिस्सा लेके। रिसेंटली हमने देखा कि शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा था, तो आप लोग काफी एक्टिव थे, फोर्सेस बनाई गई थी। अब वायलेंस ज्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम में, तो अब क्या एसएसक्यू कुछ प्लान कर रहा है दोबारा से स्ट्रीट क्राइम में एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी रिसेंटली आप 15 का जो गेट काउंट हुआ था, आपने विटनेस किया, वो लोग कौन थे? वो एसएसयू ही ऑपरेट कर रहा है, एसएसयू की टीम वहाँ बैठी हुई है। ये स्ट्रीट क्राइम में हमारा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाते हैं डिफरेंट तरीके से। जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या ज़्यादा है तो हम उस पर पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाते हैं, मगर उसके अलावा जो 15 की जो सर्विस है दैट इज़ रन बाय द एसएसयू, उन्हीं के लोगों से, और हम पब्लिक की मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी एक इंस्टेंट हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है शहरियों में कि अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है, और ये डेटरेंस, ये खौफ क्रिमिनल्स के लिए उस चीज़ को रोकने का बायस बनता है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हम चीज़ बेहतर कर सकते हैं उसको कर रहे हैं, और आइंदा इसी तरीके से करते हैं। स्केटिंग फोर्स बिल्कुल बनाई थी। स्केटिंग फोर्स का मकसद ये था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ के लिए, अभी जैसे स्टेडियम में 1 क्रिकेट टीम आई हुई है, अब जब इसमें हम पब्लिक के लिए इसको खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद होंगे। जो स्केटिंग फोर्स का था कि शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सके या जो वॉकिंग जगह है वहाँ पे करें, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए उनको हमने लिमिटेड किया। वो 20 लोगों की टीम है, वो जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हम उसको भेजते हैं, मगर मेनली उसको हमने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए रखा है। अभी आप देखेंगे जब टीम होगी, इनकी मैचेस होंगे, जब खवातीन आएंगी तो आप लेडी कमांडोज को भी स्केटिंग में देखेंगे, उनकी लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ गाइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांडोज को भी देखेंगे। तो दैट इज फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली। ये बताइएगा कि इस इवेंट का बजट क्या है? दूसरा ये बता दीजिएगा कि कराची में हॉटस्पॉट बनाए गए थे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, और ये भी कहा गया था कि एसएसक्यू कमांडोज जो है वो सड़कों पे रहेंगे, थाना पुलिस है वो गली मोहल्लों को देखेगी। कहीं पे भी एसएसक्यू कमांडो की गाड़ियां जो पेट्रोलिंग को दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से आपने बताया कि 15 में मुकाबला किया और हमने रैपिड रिस्पांस किया, तो 15 की अगर मोबाइल अलग से थी, लेकिन जो एसएसक्यू अपने कमांडोज हैं हॉटस्पॉट पे खड़े होते हैं, एक दो दफा जो है तस्वीरें भी शायद की गई थी, उसके बाद ये दिखाई नहीं। जब कराची पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा जो 15 की भी हमने स्ट्रेंथन की है वो एसएसयू कमांडो से की है, तब ये पॉसिबल है कि 3 शिफ्टों में वो 24/7 काम कर रहे हैं
और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी जी, तो हम इंशाल्लाह उसी तरीके से हॉटस्पॉट्स को भी कवर करेंगे, उसी तरीके से लोगों की मदद के क्विक रिस्पॉन्स भी करेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से इसमें कोई बजट नहीं है। जो आपकी फ़ीस है उसी से हम उनका जो खर्चा वही निकालेंगे, प्लस स्पॉन्सर्स का जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हमने 2000 रखी है फॉर यूनिफॉर्म पर्सन, 5000 फॉर सिविलियन पर्सन, और फीमेल कैटेगरी की भी 2000 फीस। अच्छा सर, ये पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एसएचयू को फॉलो कर रहे हैं, और एसएचयू की जितने भी इवेंट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बात कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है कि हमारा मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पलरी तौर पे पेश कर सकते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस है खाली ना सिर्फ एक उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि आगे लोगों के लिए भी हम एक उम्मीद की किरण है कि जब एसएसयू के जवान बेहतर हो सकते हैं, बाकी पुलिस भी हो सकती है। तो एक बेहतरी की तरफ एक हमारा इकदाम है। इस टाइम अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम 2% है सिंध पुलिस के, तो 2% बेहतर हो गया है। 98% इंशाल्लाह पुलिस का बेहतर होना बनता है। इसी तरीके से अगर लोगों की हम खिदमत कर सकें, उनकी बेहतर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है पुलिस में वो बेहतर हो सकेगा। जी, ये हमारा चौकंडी में एसएसयू का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं, और वहीं पे हम सारा कुछ शूटिंग रेंज सारा कुछ वहाँ पे हमने बनाया हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, चीज़ों को सिस्टम्स को ठीक होने में जनरेशंस लगती है। एक उसकी तरफ कदम है। शुरू में आप देखें कि मोटरवे पुलिस का जो इमेज था कितना बेहतर होगा, उसी पुलिस के लोग जाके वहाँ पे काम करते हैं तो वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक भी उससे मुतमईन होती है। इसी तरीके से एसएसयू की, तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को, मगर ये कि बेहतरी की तरफ डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। वक्त आएगा कि सारे लोग इसी तरीके से बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिनके लाइसेंस वेपन है उनका आपस में मुकाबला कराएं। उनके लिए हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। आप अपने वेपन्स के साथ हैं, वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज है। आप अपने स्किल्स के वेपन्स के साथ हैं, वहीं पे अपने आपस में मुकाबला करें। उसकी हम प्राइस की कैटेगरी अलग से करें। उसमें आपसे रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बजट भी कम किया, ऐसा हुआ आप क्यों हटे? और सर, और अब ये होने वाला है, बहुत जल्द ये बात हो जाएगा। तो आपने इतना अर्से पे काम किया, अब ये एक्चुअली होने जा रहा है, तो उसमें ना होना क्या आपके लिए फीलिंग है? इस हवाले से ये भी सामने चीज आ रही थी कि आपने कोई चीज प्रपोज की थी, एनआरटीसी को दे दिया गया बजट, और आप नहीं चाहते थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा लो कॉस्ट करा रहे थे, लेकिन आईजी साहब ने जो एनआरटीसी को दिया, इससे क्या हुई? उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट पुट इन करें, चाहे एक्स करे या वाई करे या जेड करे। हमारी मेहनत का ये फ़ायदा हुआ कि हमने डॉलर्स में प्राइस लॉक कर दी। हमने वो मार्जिन्स ख़त्म कर दिए जो लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से बढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हाफ करके हमने जो 200 मिलियन की कॉस्ट थी 100 मिलियन में कर दी। अब वो 100 मिलियन पे ही लॉक है, चाहे वो ए टीम करे चाहे बी टीम करे। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमने डायरेक्शन सेट कर दी, हमने चीज़ें बता दी कि किस तरीके से होगी, और हमने एक सैंपल के तौर पे एक पूरा एक सिस्टम बाहर लगा दिया जो अभी भी लगा हुआ है। इसको फॉलो करें तो हो जाए। तो इंशाल्लाह उसी गाइडलाइन पे करेंगे, और इसमें जब भी होगा ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा। तो इस चीज़ से हम इंशाल्लाह होपफुल है कि आगे भी चीज़ें बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है। मैं बीटीएल को रिप्रेजेंट हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ, और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजी सेगमेंट में है, एस्थेटिक इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं, वो हमारे पास हैं। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए हैं। क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह मेरे सामने यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है, जो कि एप्लीकेटर है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये
फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि आपकी बोन्स के ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है। फिजियोथेरेपी बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएसए ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन, ईटीटी मशीन, हॉटर एम्बुलेट ब्लड प्रेशर मीटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट्स की मशीन्स और डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे आपके सामने फिजिकली मशीन लगी हुई हैं, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वालों ने बड़ा ताउन किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे, और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, यहाँ पे सपोर्टिव है, और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह तो नहीं है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए। उसको हम लोग करते हैं कि पैसे चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते थे, लेकिन उसको फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है जो स्टॉल्स पे आ रहे हैं। इवन जेडीसी वाले भी आए हैं हमारे पास जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में फाउंडेशन है। तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमने डॉक्टर्स से भी बात की है। तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है, और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आनी चाहिए, और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू।
Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I shall briefly touch upon the salience and an overview of the Defence Export Promotion Organization and the ideas, mainly dilating upon the objectives and what the organization does by itself. And thereafter, we will have a pictorial documentary which will take you through the journey of the depot and the activities of the ideas. Depot was raised in 2000 under Joint Staff Headquarters, which was later placed under Ministry of Defence Production in 2004. The basic aim was to promote and project Pakistan military's industrial promise and defence export potential. All core functions of the depot are performed on a corporate model with no financial connection. The vision statement which spelled out for the depot reads: the national platform provides support to the defence manufacturing, service sector and the export chain through promotion, facilitation and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically undertakes promotion, facilitation and coordination of the business opportunities and working for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the ideas. Establishes Pakistan Pavilion across the globe. Gentlemen, in this regard, depot establishes 12 to 14 pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawal Expo at Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these core subjects, the depot also maintains an international space center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the defence industry wherein the potential buyers across the globe are now interfaced with public as well as the private defence manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defence industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is hard to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. National as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with large-scale manufacturers and our private and public large-scale defence production enterprises. Now coming over to the flagship event of Ideas. As you are aware, this is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Then the main objectives which are actually designed to be achieved out of the Ideas include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the global international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defence exports.
in building of the country, promulgate Pakistan's point of view internationally, and reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now, with this, gentlemen, with a brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you both these, whatever I have spelled out, of ideas and the depot, how did it actually reach to this where we are standing today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है। हम टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो आइडल एक्सपो है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान में मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी ये डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सके दुनिया को यस वी आर रेडी, वी आर हेयर सर्व ऑल द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो उसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस में आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। बुरा समझूं उन्हें, मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। मैं इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 के इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, सेकंड पे रख के काम करते थे। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस इवेंट, एंड माशाल्लाह इतने से के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड इंटरनेशनली नाउ बदर एक्सपो सॉल्यूशन इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे, इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है JF Thunder 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी रखी है। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अल-ज़रार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजबूर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बायस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, हर की बात हो, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है, तो उसकी वजह से अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और नेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कंफर्मेशन आ चुकी हैं क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्निटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया,
हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है, न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके रूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है शोकेस कर सके। जिस वक्त भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज़ हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज एक जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चले कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सका है और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर के बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली वो बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ बहुत हमारे लिए आसान है। Assalamualaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I'm VP Sales at Shibli. Shibli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We have come to Ideas the 3rd time. We've been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of abilities we have in the defense industry, and we can what sort of capabilities we can export and assist the armies of the world with. I would also like to thank Badar Expo Solutions because Badar Expo is basically organizing the whole event and doing a very good job. We have launched 2 products this year, SCUA MP and SCUA Mini at Ideas, which are binoculars with the LRF. This is this is SCUA MP mounted over here, which is a LRF based SCUA binocular that can be used daytime or night time to give the forces image with the exact and accurate range of the target. Thank you.
आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, 2 साल के होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट करा गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कन्फर्मेशन आ चुकी कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। जब भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज़ हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनी हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाए तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। इसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा टू बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सबके ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टेयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली उसका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई।
जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है। और जब 50 कंट्री की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो है वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इस शो के अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं। जिस तरीके से इस वक्त चीफ की भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो सब्सिडी देते हैं, तो उसमें उनका मकसद यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आती है, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं और जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिलके ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिलके अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रही है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना एक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसको उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ये मकाम दिया, ये चीज़ें दी कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ये एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडियाज़ के अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आपने सॉफ्ट लॉन्च में भी देखा कि हमने एक स्टैम्प बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह ये इवेंट होगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIDC पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट है और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडियाज़ स्टार्टेड। I've had the honor कि मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपने स्टैंड पे इस वक्त मेरा ख्याल है कि 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस तो मैंने खुद रिसीव की हैं और ये भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन। बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ जी जो डिफेंस एग्जीबिशन होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का। बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आ सके, आपकी चीज़ों को एवेल्युएट कर सके। विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad.
अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 5 p.m. मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियाज़ है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी चीज़ें 85 मुल्कों के लोगों को शोकेस कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं तो आपस में मिलकर डिफेंस के मौजूद डिफेंस प्रोडक्शन पर काम करने की हमारी जो पूरी सलाहियत है उसमें बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि कोविड गुजरने के बाद आइडियाज़ हो रहा है और बड़े धूमधाम से हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह। मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हुई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर था डेपो के अंदर और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़ एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड रख के काम करते थे। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस इवेंट एंड माशाल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड इंटरनेशनली नाउ बदर एक्सपो सॉल्यूशन इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Sindh, the Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organisation, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organisations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honourable delegates, exhibitors, and trade visitors who travelled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote
strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis is, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the
flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement in technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct business with the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all
people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unlock the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments, human capital, and professional development in the demand-driven industry. The Unity Government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Instructions formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts
of the Ministry of Defence Production, Defence Export Promotion Organisation for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defence sector and promoting international cooperation in the field of defence production. I applaud the continuous support of the federal provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan, Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haider, the chair, distinguished panel members, General Arif, DG Defence Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some of the comments which I will now be sharing with you. One of the points that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in the end, in use of any technology. It can't be panacea for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over a board of 64 pieces, 32 pieces over 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So AI can master chess better than human beings maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data crunching and associating it with the happenings around the globe, how they are going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with the stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need a lot of exercise to understand. For a normal mind, it will need, okay, the flood has come in a certain area, how does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs, can reach that level quickly where any happening around the globe and its impact on the stock can be worked out. Now, taking these two examples onto the side, look at what is actually warfare and what is defense.
War is a contest of opposing wills, but there are no rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decisions by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, the warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of AI is already in play, and we are not yet fully aware of it, but I think this is being played by the global players at various levels. And if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indians were operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think, from what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, like movement of supplies, like the time taken for move from one place to another, and so many mundane plans. Those can be, computerized and automated with the help of AI with a fair degree of certainty, and of course keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions that you make will remain human, and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those informations which human beings cannot process at one time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be a good thing to predict something which may change very suddenly, and we may find that sometime in near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I am certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings. And that is what we need to cater for. And as practitioners of war,
we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you gave us. You have given us a lot of food for thought, and I'm sure all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Defense Minister, Maja Muhammad Asif, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a matter of great honor for me to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, galaxy of senior serving and months. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing occasion to formally launch International Defense Exhibition Seminar 2022, better known by its acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered into the national defense exhibition industry by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last decade, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEAS 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky General Ahmed is here was the region and we had a record participation across the world. The opportunity to accelerate the IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst catastrophes of our day. World in general and Pakistan in particular fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of the available space state to date. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invite. IDEA has established itself as an effective and grand conduit to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. In this light, Pakistan's industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry. Ladies and gentlemen, present Pakistan's defense industry to the outside world by facing Pakistan's production capability and conventional aimed at exploring ways and means of partnership, defense production through joint ventures, outsourcing and promotion. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision idea, which is twofold. On one, it aims in space for joint operations between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners. On the other hand, it is meant to enhance the possibilities of private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit there, interact with each other, collaborate, optimize defense size, and find solutions to the problem from the region in the world. I wish to make a special mention of the Ministry of Commerce as well as the Trade Committee of Pakistan for their support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank Chief of Communication and Director of Pakistan for attending the group for issuance of commemorative postage on 14th of August 2022, signifying the holding of the edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the government of State and Karachi District Station are always forthcoming and supportive of holding this event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, event organizer, his unique, his undying efforts and courage. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defense Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan and Zindabad.
Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I shall briefly touch upon the salience and an overview of the Defence Export Promotion Organization and the ideas, mainly dilating upon the objectives and what the organization does by itself. And thereafter, we will have a pictorial documentary which will take you through the journey of the depot and the activities of the ideas. Depot was raised in 2000 under Joint Staff Headquarters, which was later placed under Ministry of MP. The basic aim was to promote, project Pakistan military's industrial promise and defence export potential. All core functions of the depot are performed on a corporate model with no financial burden on the extra. The vision statement, which is spelled out depot, reads: the national platform provides support to the defence manufacturing service sector and the export chain through promotion, facilitation and coordination for sustained growth of defence exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot basically provides promotion, facilitation and coordination of the business activities and working for the defence industry. It organizes defence exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the ideas. Establishes Pakistan Pavilion across the globe. Generally, in this regard, DECO establishes 12 to 14 Pakistan pavilions annually across the globe in different countries for our own defence production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single country exhibition in Iraq, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the DECO has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendor Defence Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the Defence Exhibition at the Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defence Port Turkey at Islamabad. The Ideas has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and it has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains international space center at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the defence industry wherein the potential buyers across the globe are now interfaced with public as well as the private manufacturers. A comprehensive defence products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all
all our missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Well, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot. Basically focused on the private finance industry, and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is hard to note that 8 private companies participated in World Defence Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. Besides the focus on the suppliers, vendors and the small manufacturers, basically link them with the large-scale factories and our private and public large-scale defence production enterprises. Now coming over to the flagship unit ideas. As you are aware, the ideas is the flagship unit of International Space Fund, which is a sought-after group business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defence industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutually beneficial relations. Given the main objectives which are desired to be accrued of the ideas include provision of the business opportunity for the defence industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase the defence exports, in the building of country, propagate partners' point of view internationally, and reinforce diplomatic efforts in the realm of defence diplomacy. Now, with this gentle document with a brief introduction, I shall now take you through a documentary which will actually show you these whatsoever I found out about ideas and how did it actually reach to this previous time today. Thank you very much. It is indeed a matter of great pleasure to see the International Defence Exhibition and Seminar, more popularly known as IDEAS, gaining strength with every passing year. The exhibition has grown in scope and stature in a span of 22 years. Over the years, IDEAS has become a great meeting place for defence critics, high-level defence delegates, analysts and traders from all over the world. This rendezvous ideas provides excellent opportunity to develop better understanding and friendship, networking of the defence industry for trade and joint ventures, and more importantly, seeing affordable solutions to meet the challenges being faced by the defence industry. I should say I am really proud of the progress which IDEA has made and which is evident by an overwhelming participation of traders, exhibitors, delegates and visitors last IDEA held in year 2008. Honorable Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to guard territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are patriotic and known for their nationalism. The world over, our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential, guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirements, our defence products are gaining shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main tanks, UAVs, army vehicles, air-launched munitions, fast-track
missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis through responsible arms trade. Holding of idea reflection of Pakistan's consistent efforts to galvanize industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures. In addition to indigenous production, having overcome the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affect the whole world, we are back in business with a renewed zeal and enthusiasm. I wish organizers of this event success in the conduct of Ideas 2020 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to Ideas 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business associate community and media houses who have selected mega event national for participation and sponsorship. Thank you all, Pakistan and Badar. मैं तो बहुत अच्छी बात है जी, मोस्ट वेलकम। और 75th हमारी बस्ती भी है और इसके ऊपर बिल्कुल आइडिया 2022 होना चाहिए और भरपूर जो जज्बे के साथ होना चाहिए। ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है जी। हमारे माशाल्लाह टेक्निकली लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप देखें कि हमारी आर्म फोर्स जो है फुल इक्विप्ड हैं और माशाल्लाह से नई टेक्नोलॉजी में जो है हम मतलब बहुत आगे हैं और उस लिहाज से पाकिस्तान का इमेज जो है इससे और जो है वो बिल्ड हो रहा है और बहुत बेहतर हो रहा है। This is me, Rusa Salahuddin, as outreach manager from ISPR. We have a stall here in Idea 2. हिलाल पब्लिकेशंस सभी जानते हैं कि हिलाल पब्लिकेशंस जो है वो 1948 से पब्लिश हो रहा है और यहाँ पे अपने जो मैगजीन जो बुक्स को डिस्प्ले करने के लिए आया है बिकॉज आर्म फोर्सेस मैगजीन और हमारा जो बेसिक पर्पस है वो यहाँ पे अपनी जो है आर्म फोर्सेस में जो हमारी मैगजीन रिलीज हो रही है इसका मोटिव जिसमें हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, आइडियाज़ को स्पेशली जो है वो अपने मैगजीन्स में हाईलाइट कर रहे हैं। जो है जो है स्पेशल रिपोर्ट्स भी है इस पे। सो दिस विल बी अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिकेशंस। दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें जो है डिस्प्ले कर सकें। My name is Özgür Cankara. I am the Vice President in Texandif. Texandif is one of the major companies in the Turkish industry. Working in the Pakistan market sector for 3 years. We are the supplier of the ECMO sonar, which will be used in the military ship, which will be delivered by ASWAT. So today we are in the expo presenting our sonar systems, including ECMOs. And more than that, we are also supplying sub-sonar systems. We are promoting our newest products, which we have already delivered to Turkish Navy. And I think all these will support the Pakistan Armed Forces and Navy and the Air Forces in a sense.
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इग्लू पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को उस वक्त यहाँ पे It's 6 p.m. So we went through the nitty-gritty, the hard part of AI. My objective of that discussion was to lighten a little bit and put the discussion in a context, the context which is very important. Personally, I'm basically a computer science person, technology person, and I'm too afraid of technology. You can't imagine how much afraid I've stopped using PowerPoint technology for the last 20 years now. I believe I'm much better. This is distracting, right? So this is distracting what I was doing, and you can actually see those PowerPoint slides were distracting actually. The presenter is unable to express what is in the heart because maybe the presentation was not visible, it was made for some other context. And my advice to all the students basically is, I'm trying to, but I'm not quite able to bend the PowerPoint slides from the classroom. But basically, what I'm trying to emphasize is that the technology is as good as the people using it. A simple knife in the hands of an expert butcher will be able to make that meat into a beautiful piece of something eatable. And that same knife in a nincompoop like me, who doesn't know how to use the knife, will simply spoil it. That is as true with the technology, such as a simple knife. It is as true with the more sophisticated technology like a PowerPoint slide, and even more sophisticated technology like the graphics. So these graphics help. They help some of the time and not all the time. We need to be humble about the use of technology. It is for serving our purpose. It is not to serve the purpose of technology itself. It is not for the purpose of serving the purpose of the capitalist economy that would like 2G to be replaced with 3G, to be replaced with 4G, to be replaced with 5G, to be replaced with 6G, and in each such transition make our life more and more miserable and more where we do not have the quality time for us. So we were talking over here about artificial intelligence. There was a great debate between Peter Norvig and Noam Chomsky. The basic issue today where we are using data, and I think the example is very well put. We have all data about planetary motion. So we are taking readings. We know precisely when a particular planet will be at a certain time. We've been taking those readings for the last, say, 20 years, and we have massive database which precisely predict, based upon the data itself, where the planet will be on such and such date. But does that mean that we do not need the Newton's equations of planetary motion? Because the Newton's equations of planetary motion required intelligence, the human intelligence. Whereas simply predicting something on the basis of huge number of data instances that we have is of course efficient, is of course speedy, it of course scale up, it makes our life easier, but will not be able to resolve some of major issues, major concerns of our life, which is how to be happy, how to live with equanimity, what happens when there is war, and how to avoid wars, and when to stop. Yes, it is a tool,
that has to be used, but has to be used in a sparing fashion. We just saw what a soft power of USA versus the hard power used in Afghanistan did. So yes, it is for the time it happens, and it is an essential part, but must not lose sight of greater picture of our life. So the technology is as good as the people using it. If the people are not good, I don't know what will happen. As the speaker pointed out, that in most of the cases we are using the same password that was given by manufacturer when the machine was installed. I think that would also be true in 95% of cases within Pakistan also. So this was also pointed out, AI is as good as the man behind the programming of the AI code that is being put in the machines. So, and that person can also put in all the viruses that one wants. And the machines, those hi-fi machines that we are buying, I'll be surprised if the manufacturer has not put in a fail-safe switch in there. It is really an income of the manufacturer not to have put, when shut down the machine, getting such and such signal. I think that's pretty easy to do and pretty simple thing. So we need to be humble about technology. It's not a panacea. It's good for solving specific problems, directed problems, and solving particular issues, very well-defined problems. But at the current state of the art, thinking about big decisions, I believe the human will have to take and shoulder those things. But yes, of course, the challenges of speed and the repetitive acts that are coming in require repetitive AI technologies. So we need to identify the context in which it will work or will be useful for us, and the context in which it will not be. The other major important thing are the fake news. We have seen how the loyal people could be used simply by pumping up the loyalty to an extent that it starts harming them. And that has happened in USA, it has happened in UK, it has happened in other countries, and it can and is happening around us also. We need to be aware of that, and we need to be humble that this alarm which is going out is actually an alarm or just fake news or a fake alarm. So it's very murky, and there are these algorithms and philosophical discussions, and we need to be aware about their philosophical understandings also, just not believing in the technology as a panacea for all. I would like to thank the moderator, the speaker over here, for taking time out and doing a interesting and a wonderful discussion. It was a great learning exercise, and we all learned a great deal. Thank you very much. Defence Export Promotion Organisation under patronage of Ministry of Defence Production, Government of Pakistan, and managed by Badar Expo Solutions is organising the 11th edition of International Defence Exhibition and Seminar Ideas 2022. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse defence industries. The 4-day exhibition will provide an opportunity for G2G, B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in defence sector. A strategic seminar will also be conducted during the exhibition, in which speakers, experts and reps, public and private sectors will share their views on artificial intelligence defence market. Ideas will be held from the 15th till the 18th of November 2022 at Karachi Expo Centre. For exhibition stands and sponsorship participation, please visit our website www.ideaspakistan.gov.pk. Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem, Regional Business Manager Fast Kids Limited. Today we are here on second day of Ideas 2022. Ideas जो है बड़े गैप के बाद हुआ है 22 में, इससे 4 साल पहले हुआ. It's a good area where industries can introduce
जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही है, उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। फास्ट केबल ने भी इसमें पार्ट किया। फास्ट केबल द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर who has civil line technology, और इसके अलावा we have aluminium alloy bond. We are the first schema gold certified here in Pakistan, and we also have launched first fast tasseek. We are the first one who launched their app Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय करते हैं। We also launched the fast tasseek, आप जब भी फर्स्ट का प्रोडक्ट मार्केट्स खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट। So we claim that fast serves you the real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 vehicles, and also we are manufacturing grille tractor, जो कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, और हम उसके जरिए नेशनल ग्रिड को और जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स उसको रिजाइज कर रहे हैं। सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के रेलेवेंट हैं, आइडियाज जरूर विजिट करें। यहाँ पे को बहुत से वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। थैंक यू। मेरा नाम मारिया फातिमा है और मैं यहाँ पे बचत एक्सपो में खड़ी हूँ, और ये इसके ऑर्गेनाइजर है बदर एक्सपो। और हमारी आइसक्रीम कंपनी का नाम केटी आइसक्रीम, जो कि हमें बहुत अच्छी है, जो कि और बस स्कूप इसमें 100 उसका यहाँ पर है, और इसका रबड़ी कुल्फा है, पिस्ता रबड़ी है, और أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ताक़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फीलत और बुलंद दर्जाता फरमा और उन्हें उस महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे अदा फरमाया है, और क़यामत Assalamualaikum. My name is Awais Nadeem. I am General Business Manager Fast Kids Limited. Today we are here on second day of IDEAS 2022. IDEAS एक गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can produce locally हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, या उससे रेलेवेंट इंडस्ट्रीज बड़े आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स सर्व कर रही हैं. वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्टिबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्टिबल इज द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज सिविल लाइन टेक्नोलॉजी. और इसके अलावा वी हैव मिनिमम अलाउंट. वी आर द स्कीमा गोल्ड सर्टिफाइड हियर इन पाकिस्तान, एंड वी आल्सो हैव लॉन्च द फास्ट वीक, एंड वी आर द फर्स्ट वन हु लॉन्च देयर ऐप इन पाकिस्तान, जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को घर बैठे बाय कर सकें. वी आल्सो लॉन्च फास्ट वीक कि आप जब भी फास्ट प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. सो वी क्लेम दैट फास्ट serve you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 kV cables, and also we are manufacturing grill cutter, जो कि हमने एक import substitution की है. हम उसके जरिए अपने नेशनल ग्रिड्स को और इतने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. सो आप सब जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आईएस को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि रियल फेस पाकिस्तान का, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट का. थैंक यू. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers platform G2G, B2G, and B2B joint venture investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Obviously, ideas is जिस तरह आपने बोला कि लोकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल एज के लिए बड़ा ब्रिज का काम करता है. तो कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो ऐसी बात है कि इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन दिस ईयर दे डूइंग इट, एंड आई थिंक वी विल अप टू वी हैव मिस्ड आउट. बट येट अगेन आइडियाज का सक्सेशन में होना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, मुल्क का ग्लोबल सेक्शन के लिए, क्योंकि आप देखते हैं इसमें दुनिया की मिनीज आती हैं, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, तो एक पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे लाने में आईडी का बहुत बड़ा रोल है. देखिए लेवल का ये इवेंट है, जिस लेवल की इसमें पार्टिसिपेशन है, ये अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स एक तो टॉप क्लास होल्डर्स हैं, जिसमें आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री हो गई, डेपो हो गया, बदर एक्स हो गया, ये लोकल आप जितने बड़े डिफेंस प्रोटेक्शन फर्म्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज पुट अप इन पाकिस्तान. और कराची किस्मत है कि हर साल कराची में होता है. थोड़ा सा लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो कंपैरिजन टू इट. Putting Pakistan on a global scale in defense production capacity in our requirements is what is pitched really with ideas. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition is a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will go from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening. So today I would like to deliver presentations about development of 5G net-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 topics. The first one is I will give very brief introductions about the 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields? And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start this triangle. Is very famous in explaining about 5G. If I only have one slide, we can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left. No, previous slide, please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communication. So it's about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium, and even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one use case in the 5G will be massive machine type communication, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for Industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, the upper left or upper right picture showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in various type of cases, for smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to AI or on also the edge computing. Slide, please. And in this slide, you can see that the standardization of 5G is not still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. Some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there,
but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even 5G is originally developed for civilian applications. Recently, there are many studies saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach 70,000 million US dollar. This is a significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slide because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is a set of parameters, can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI. And then cloud native, mobile computing, and of course, millimeter wave. Next slide. So with all those enablers, we can see that there are many studies, many research about use of the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Finable and so on. And next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means in the battlefields using millimeter wave so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROC, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it's in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of file layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 25 times. And the biggest contribution comes from the smaller cells. It is 1,600 times. So all components is, if it is there, then it's very good. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, the most important part here is the challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in 4G, software and hardware interlock to each other. Most of them are not open. Okay, and in the 5G, there is so-called decoupling
decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling but also orchestrate using the AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about bandwidth and delay. I think we can skip one. And next one. Next. The next one is about use the IP version 6. Next one. So as we can see, one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, edge cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts for security. Next, 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 next. Okay, we compare this 5 to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. Problem is that because 5G is more software, meaning that security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like last said just now. Maybe we need to use the cyber security approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G, but because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard stuff still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if standard is there, okay, the standard is just the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are into the deployment process, and another security issues that are into the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the more important things that security challenges. So we need to do very important and serious research. We want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide from my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideas 2024. Brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offered platform G2G, B2G, and B2B strategies, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shah Ismail. I am the director of Premier Cables. Premier Cables is one of the leading manufacturers of telecom cables, that is optical cables, copper telephone cables, duct tape and jointing materials. We are here today in Ideas to exhibit our new products to the home, fiber to the room, and a lot of other new varieties demonstrate here. And inshallah, we hope that in the coming future we are going more and more better for development of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मसूद रज़ा है और मैं दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता। आइडियाज़ का यही बड़ा यूनिक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतनी ज़बरदस्त एग्जीबिशन जिसमें दुनिया के तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक इस दफ़ा भी शिरकत करें। माजी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इस एग्जीबिशन की जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त। यहाँ न सिर्फ इसकी हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होता है, इसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती, बल्कि शहरियों के लिए भी एक बड़ी दिलचस्पी बाइस होती है। 3-4 दिन जितने दिन एग्जीबिशन है, शहरी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरी दुआ है इस दफ़ा भी ऑर्गेनाइजर के लिए ये इवेंट बड़ा कामयाब हो और ये पाकिस्तान 76वीं सालगिरह के मौके पर इवेंट हो रहा है, तो पूरे पाकिस्तान के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। सारे पाकिस्तान को इस इवेंट की मुबारक। ITIS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2G ventures and investments in defense production sector. A 2-week seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEA will hold from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Bilal Buzardari, Honorable Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, Federal and Provincial Ministers, Chairman and Chief Staff Committee, Service Chiefs, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of National and International Defense Exhibitors, OEMs, Excellencies, Academia, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of Ministry of Defence Production, Pakistan, we are indeed grateful to you for gracing this occasion of 11th edition of International Defence Exhibition Seminar Ideas 2022. I am grateful to the guests and dignitaries from participating countries, foreign and domestic exhibitors, OEMs, trade visitors, and diplomats for their healthy presence to make IDEA 2022 a great success. I also warmly welcome all those who have joined us for the first time, and my profound regards to all the old friends. I assure you that it is you who make this event substantive. Distinguished guests, the development of indigenous and internationally competitive defense industry is always a strategic interest of any nation. Today, it is regarded as one of the major business in the world, alone accounting for approximately 2.2% of global GDP. On the other hand, globalization of defense industry has also changed the geography of innovating with new players, markets, partners, and opportunities.
New strategic alliances ranging from consortia to joint ventures have become the norm of the day both in the domestic and foreign industry. In the regional context, prevailing politico-military realities have further accentuated our desire to develop an agile and innovative defense industry, not only as an instrument of peace and stability, but also for its rightful contribution towards socio-economic development of the country. Pakistan has the potential to emerge as a global platform for defense, research, scientific growth, manufacturing, and joint ventures in order to strengthen our defense capabilities and developments as well as exports in this sector. Ladies and gentlemen, Pakistan's defense industry today comprises of a wide range of technologies, well-trained human resource, and infrastructure, not only to meet its own defense requirement, but also export to international defense markets. While many defense products are manufactured by the government-owned defense production establishment, private defense industry is also instrumental in producing high-quality supportive equipment and services. Joint development and production of main battle tanks, Al-Khalid and Al-Zara, aircrafts, JF-17, KA, Super Mashak, UAVs, maritime patrol vessels, fleet tankers, fast missile crafts, different variants of APCs, air launch munitions, small arms, and higher grade explosives. A few mentioned in this regard. Ladies and gentlemen, towards this end, Ministry for Defense Production is continuing to evolve clear priorities and approaches for protecting and defending Pakistan defense industry interests at home and abroad. Accordingly, with dedicated efforts, regularity, initiatives, and incentives have led to improved defense manufacturing and quality services. Resultantly, Pakistan's defense exports are steadily growing, and today it is touching the figure of $82 million. This export potential is not only instrumental to the country's economic growth, but also to our mutually rewarding relations with international fraternity. Today, we are the reliable export partners of more than 60 countries. Through mutual partnership and joint ventures, Pakistan Industries' effort offers a wide area of cooperation and collaboration. Ladies and gentlemen, here I would like to particularly mention the significant role of the private sector in our defense industry. It is the fact that enhanced collaboration of private sector in defense manufacturing will not only increase production, but also provide the much needed support to public sector defense enterprises. The growing indigenous sophistications of private sector is indeed an attractive investment opportunity. Our government is now keenly encouraging private sector to expand its capability